So students, then in this video we are going to discuss about two cases like what we have done on a straight line path on the road. Ki what values do we have for u, v, u and v for accelerated motion and retarded motion. Likewise, we have to discuss about the values for u and v for accelerated and retarded motion when the body is moving या body is thrown vertically up or thrown vertically down. So the difference between the questions what we have done earlier and this time what we are going to do is कि earlier we have done the motion on a straight line path or any other motion that was on road. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइट्स कि अगर ऊपर से नीचे फेंकी गई बॉडी या नीचे से ऊपर फेंकी गई है बॉडी तब क्या डिफरेंस हो जाता है यू या वी की वैल्यूज़ में. सो लेट अस स्टार्ट विद अ केस विच इज़ द बॉडी इज़ प्लेस्ड एट सम हाइट, बॉडी इज़ प्लेस्ड एट टॉप and it has to be thrown vertically down. When it is thrown vertically down, where it will come? It will come ultimately towards ground, or if there is some catcher in its path, in the path of the body, then he or she will catch that ball or that body. That is another case. But ultimately, if there is no one to catch that body, then ultimately the body is going to come at the ground itself. So at the top, the body is lying at rest. Suppose I have kept a pen over here at some height and it will remain at rest until and unless some external force is applied on it. So it is at the top and the body is not at all moving of its own. अगर इसके ऊपर एयर या वाटर या कोई और फोर्स लगाएगा तभी ये बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज दिस विल नॉट मूव एट ऑल. सो इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. नाउ इट हैज़ टू बी थ्रोन डाउन. अब उसको हम नीचे फेंक रहे हैं तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट. हमने उसके ऊपर कुछ काम किया, हमने कुछ वर्क किया और उसके ऊपर धक्का दिया उसको या गिरा दिया. द बॉडी स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. अब जब वो नीचे आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है. इसको आप कंसिडर करो एक पेंडुलम वाले एग्जाम्पल से, जो आप कोलम्बस वाले स्विंग्स होते हैं. जब आप एकदम से झूले में ऊपर से नीचे आते हो तो नीचे आते हुए तब क्या होती है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. या जो आपकी स्लाइड्स भी होती हैं, स्विंग्स में जो स्लाइड्स होती हैं, वाटर स्लाइड्स होती हैं, जब आप बिल्कुल नीचे जाते हो देन योर वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम. बहुत हाई स्पीड से आप नीचे गिरते हो स्लाइड से, इवन वाटर स्लाइड्स में भी. तो वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो एट दैट टाइम, रादर इट इज़ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो जाती है. सो दीज टू वैल्यूज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर. And according to this formula, when u is 0, this negative part has become 0. So what we are left with? We are left with velocity only, which has positive sign. So acceleration will carry positive sign. And why this is positive? This was all because of numerical data. Why it is positive? Because the body was thrown from some height and now it is coming towards ground. So body is following the gravity of the earth. वो अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कर रही है. तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी इन अकॉर्डेंस टू ग्रेविटी, द बॉडी हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे अपवर्ड, तो द बॉडी इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून. So in that case, acceleration will come out to be negative. That we are going to discuss both by numerical problem as well as theoretical also that I have told you. So let us start with this case. Let us come to this case when the body has to be thrown at some height from ground. अब ground पर एक body रखी है, अपने आप तो वो भी ऊपर नहीं जाएगी. We have to apply some force. We have to give the body some speed or velocity. So it was placed at ground. So ground पे रखी हुई है, आपने उसको initially velocity देनी है. आप ये पेन रखा है, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, मुझे इसको उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा. मैं इसके ऊपर वेलोसिटी लगा रही हूँ. तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर दिस केस. बट एज सून एज इट रीचेज द टॉप, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, जो कि होता नहीं है. अर्थ की टुवर्ड्स बॉडी से अट्रैक्ट होती हैं. तो बिकॉज दिस बॉडी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सो व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, जब वो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा, देन अपेरेंटली मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो. या आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम स्लाइड्स में, वाटर स्लाइड्स जब आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं, या कोई भी आपका स्विंग है जैसे कोलम्बस ही है, जब वो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाता है, जितनी ऊपर जाएगा उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वाई दिस इज़ सो?
because we have to apply greater and greater amount of force so as to cope with the earth's gravity. अर्थ की ग्रेविटी को हमें बैलेंस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स सिर्फ हमें ऊपर तक ले जाने के लिए काम आएगा, उससे हमारी स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड धीरे धीरे कम होती है. सिर्फ जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन मूविंग, इन हेल्पिंग अस टू मूव हायर एंड हायर. वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है. तो एट इट्स मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अपेरेंटली कम्स टू ज़ीरो. सो अब इस फॉर्मूले में देखो u इज़ नॉट ज़ीरो, this u is not 0, but v at the top becomes 0. So due to this negative sign, acceleration will become negative. Moreover, you can realize this by that we are moving against the gravity. So against the gravity, acceleration due to gravity, acceleration produced in the body or felt by the body will be negative. अब इन हाइट्स वाले एग्जाम्पल्स में हमें एक फ़ायदा होता है कि वी आर नॉट bothered about the values of acceleration. Sign हमें पता चल जाता है कि if we are coming down, acceleration will be taken as positive, but if we are going at the top, acceleration will be negative. This you have to cram, but values जो होती हैं that are fixed. Either 10 meter per second square you can take or 9.8 meter per second square you can take. If you are going from top to down, the value will be plus 10.10 or 9.8. Out of this you can choose any of your choice, or it may be provided to you in your question itself. But if you are going against the gravity from ground to the top, then this acceleration due to gravity or this value of acceleration will be taken as 10 minus or minus 9.8 meter per second square. So let me tell you this कि whenever when we are going to choose 10 or when we are going to 9.8, whenever the data given in question is a multiple of 10, 5, 10, 15, 6, 15, 20 for initial speed, for distance, for time, अगर वो 10 के मल्टीपल्स में है तो you can choose 10. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, अगर आपको खुद से चूज़ करना है, और अगर गिवन है तो वही लेना पड़ेगा. और अगर आपका जो न्यूमेरिक जो डाटा है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, इफ़ इट इज़ इन मल्टीपल ऑफ 4.9, 9.8, 19.6, इस तरह से अगर डाटा गिवन है तो यू कैन चूज़ 10. There are two things: either the data 10 or 9.8 will be provided to you in the question, or it may not be provided or may not be given in the question. When it is not given, then it's your choice either to choose 10 or to choose 9.8. When you can choose 10, when the question carries that data as 5, 10 multiples of 5. Or if we are given the data like in the form of 4.9 second, 9.8 meter or 19.6 meter per second, then we are going to choose this value for the ease of calculation work. That's it. So this was all about the sign convention, the signs what we are going to choose for calculation of numericals. So let me discuss with you people is one NCERT problem. This question number 7 of page, I don't know what the page is. This is 113 page, question number 7. This is main exercise question. So let us do this. A ball is gently dropped from some height. उसको ऊपर से नीचे गिराया गया है. हाइट कितनी थी? 20 मीटर. So कौन सा केस हो गया इसमें ये हमारे पास कि बॉल इज़ ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम द टॉप और उसको नीचे की तरफ गिराया गया. तो क्योंकि वो बॉडी टॉप पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज 0. नेक्स्ट इज इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ डोंट कन्फ्यूज दिस कि ये आपकी वेलोसिटी है. द मोमेंट यू सॉ द वर्ड वेलोसिटी यू से चलो फटाफट वेलोसिटी मिल गई हमें, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज. Read the statement carefully. This is rate at which the velocity increases. So this is acceleration. This 10 meter per second square is acceleration. And if still you people are confused, then do have a watch
towards this unit part. This is meter per second square, and meter per second square, we very well know that this is not the unit for velocity, it's the unit of acceleration. So either by unit or by reading the data carefully, you can easily snatch out whatever is being given to you in the question. With what velocity will it strike the ground? मतलब जिस velocity से वो नीचे गिरेगा, with that velocity we have to calculate. And after what time it will strike the ground, कितने time पर वो ground पर fall करेगा. So let us start with the data provided to us. See, acceleration is 10 meter per second square that we have to take, because the body is coming down towards the ground. So acceleration will be taken as positive. Sign will not be given to you, that you have to write of your own. U is 0 because ball was placed at the top and it is thrown vertically down. S or H, in terms of vertical distances, height is distance. तो जो आपका पहले लीनियर था, जो आपका रोड्स पे था डिस्टेंस s, वो अब हाइट्स पर क्या हो जाएगा, हाइट या डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा. v निकालना है और t निकालना है हमें. तो यूजिंग इक्वेशन s इक्वल टू ut हाफ at square, we have fed all the values, and in second part you have to calculate velocity value. We have inserted all the values, and what we are left with, velocity. So the main thing was to choose sign conventions and to give proper signs to the values assigned to us. Now let us come to another problem related to height. Let me consider one more problem that is given in your NCERT, that was at page 110. See this question. A stone is thrown vertically upward. So in last question what we have, a stone was thrown vertically down. Now the stone is thrown vertically upward. So the questions are totally opposite. That's why I am doing these two numerical problems. So stone को हमने कहाँ करा है, नीचे गिराया है, हम नीचे से ऊपर फेंका है. So this will be the case. नीचे से ऊपर फेंका है तो u0 नहीं होगा, u आपको देना पड़ेगा, स्पीड आपको देनी पड़ेगी. सो दैट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन with velocity of 5 meter per second. So this is 5 meter per second. This is the initial speed. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the downward direction, what will be the height attained by the stone? Height we have to calculate, and time will be we have to calculate. Acceleration is given to you, that is 10. Why this is 10? It must be 9.8, but since this was 5, so to for the ease of calculation, they have themselves given this value to be 10. So let us come to that problem now. U equals to 5, initial velocity is given to you, acceleration is 10, but we have used negative sign. Why we have used negative sign? Because the body is thrown vertically upward, the body is going against the gravity, so acceleration must be negative. That I have told you earlier also. H or S, height or distance. Vertical distance is height. Height we have to calculate, and time we have to calculate. This was not given in your question. This you have to write of your own. In these questions where we are going to deal with heights, here what is important, we have to use sign for acceleration, that we have done earlier also. But for velocity, u and v, even for the vertically thrown upward and thrown vertically downward, we have to choose sometimes ourselves. So by using v minus u equals to 80, we have inserted all the values. This was a mathematical calculation, and time we have got this is 0.5 second. And for distance, but we have used ut plus half at square. You can use v square minus u square equal to 2as also. Anything can be chosen from these two equations according to your own choice or your own calculation work. So this was all calculation that I have done.